हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप ट्रेडिंग अच्छा चल रहा है। ओवरऑल चलना चाहिए क्योंकि मेरा तो अच्छा चल रहा है। जैसा हम लोग सोचे थे, जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम लोग मार्केट के साथ ब्यूटीफुली फ्लो कर रहे हैं। हाँ, एक दो गलत ट्रेड तो हो ही रहा है, दैट इज पार्ट ऑफ द गेम। बट ओवरऑल हम लोग सही दिशा पे, वी हैव एग्जिटेड द स्टॉक मार्केट फ्रॉम द स्टॉक्स एट द राइट टाइम एट द टॉप। और अब मार्केट को देखो, इट्स गोइंग डाउन लाइक डैम। Let's what is this talk is about look at the commodity market, though it's not a stocks are exciting things are happening in stocks, but commodities are also doing awesome trades आ रहे हैं। अगर आप मेरे फॉलोअर हैं, आप जरूर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं। सो व्हाट इज द फर्स्ट रूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट? We do not listen to anybody else for trading. We look at the setup, we look at the market and decide whether you are going to take this trade or not. So ये playbook, basically my playbook, what I'm thinking, beautifully nifty जा रहा है, lovely this is, I'm short. This is wonderful drop and further, जैसा मैंने expected बोला था कि it's further looks like further drop is expected. So anyway, I'll cover Nifty later on, but let's look at what's going on with the commodities and what's my playbook is suggesting. So copper, I had suggested being bullish, so I'm still bullish in copper overall, but somewhat I'm exited. It's an important resistance. And overall, I don't have any super reason with this tariff coming up on China, and I don't know how the demand and recession and the growth will play out. So I'm not very bullish on copper, but it was a good ride on the upside. You could have seen the ride in MCX. In MCX, you can look at the ride in comics as well, but M6 it was more prominent. But overall things have gone. I closely follow कि comics का chart में क्या हो रहा है, या London Metal Exchange में क्या हो रहा है. So currently I'm out of copper. So कॉपर में और प्लान भी नहीं है। इंटरेस्टिंग है तो बहुत टाइम से एल्यूमिनियम, बट मुझे आई एम नॉट। मेरा इसमें ट्रेड पहले फेल हुआ है, द ब्रेकआउट अटेम्प्ट, इट डिड नॉट वर्क आउट। नाउ फिर से मैं बार बार तो अटेम्प्ट नहीं किया। When it's beginningly two times it failed. Since then I'm waiting in aluminium, and it has not broken. I think it will looks like कि break होने का possibility तो लग रहा है। और हो भी सकता है, आई डोंट नो एट दिस पॉइंट। सो इसीलिए मैं डिसाइड किया एल्यूमिनियम में आई वेट कि ये क्या कर क्या रहा है, ये माउंटेन टॉप विच इज द टफेस्ट रेजिस्टेंस होता है मेरे सेटअप में। मेरे सेटअप में इसको, ये जो टॉप दिख रहा है, इस टॉप को बोलते हैं माउंटेन का टॉप। सो माउंटेन यानी पर्वत, पर्वत का एकदम ऊंचा पॉइंट। सो इट एक्ट्स एज द टफेस्ट रेजिस्टेंस। सो ये और कंसोलिडेशन होने का चांसेस ज्यादा दिख रहा है। कैंडल बहुत ही छोटा हो चुका है, वो मिनिमम स्टॉप आउटसाइड कैंडल बॉडी जा चुका है। सो इट इज नॉट रियली ग्रेट। मैं आउट ऑफ एल्यूमिनियम, आई एम आउट ऑफ जिंक, आई एम ब्रॉडली एक्चुअली बेसिकली आउट ऑफ बेस मेटल्स। बेस मेटल्स में नथिंग इज मच हैपनिंग, एक बड़ा सा रेंज होके बैठा है। बेस मेटल बढ़िया रन दिया है, बट लार्जली जो कुछ भी ट्रेंडिंग दिया है मोस्टली इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ईयर rather than सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। सेकेंड हाफ बेस मेटल्स कुछ खास नहीं दे रहा है, और मैं ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ विथ ट्रम्प देयर एंड एनीथिंग हैपनिंग विथ चाइना। मैं थोड़ा बेस मेटल्स आइदर लाइक या तो ना ट्रेड करूंगा अनलेस आई गेट अ गुड कंफर्मेशन, गुड रिस्क रिवॉर्ड एंट्री पॉइंट और समथिंग। रादर जो बढ़िया जा रहा है दैट इज गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड इज हैज गॉन ब्यूटीफुल। हमारा जो लॉन्ग ट्रेड, कल जो क्लास था, आप लोगों को याद होगा कि कल के क्लास के टाइम हम लोग को फिर से री एंट्री अपॉर्चुनिटी मिला था बाय सपोर्ट। एंड गोल्ड सो फार अभी तक देख के लग रहा है इट इज गोइंग ओके, ग्रेजुअली ओके। एंड देख के लग रहा है इट इज गोइंग टू गो अप फार्दर। तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तो ग्रेजुअली आप ब्रेक कर लिया, ये दैट इज बहुत इंटरेस्टिंग। कैंडल का साइज बढ़ रहा है, मतलब वी कैन सी वोलाटिलिटी। वोलाटिलिटी मतलब जिगजैग वोलाटिलिटी बढ़ रहा है, एंड मोमेंटम भी कुछ खास नहीं। सो गोल्ड इज गोइंग अप, आई एम लॉन्ग, बट ये बहुत ही ग्रेजुअली ऊपर जा रहा है।
एंड मेन और एक रेजिस्टेंस आ रहा है वैसे वेरी टफ वन, दैट इज 2670, इसीलिए इतना थिक किया गया है इन लाइन को। ये इस चार्ट में नहीं दिखेगा, इज पॉसिबली फ्रॉम अपर टाइम फ्रेम। अपर टाइम फ्रेम से ये रेजिस्टेंसेस आ रहे हैं। So let the chart come. So this is the candle top, anyway important resistance. This was an important resistance. So अब एक गोल्ड एक रेजिस्टेंस जोन में घुसा है। So once again it can remain here. No major catalyst, ऐसे फंडामेंटल डेटा कैटलिस्ट कुछ है नहीं गोल्ड को पुश करने के लिए। आई विल रिमेन लॉन्ग ऑन गोल्ड, मैं सेल का नहीं सोच रहा हूं। सिल्वर इज इंटरेस्टिंग। सिल्वर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था नीचे अगर टूटेगा से देन इट विल बिग ड्रॉप, क्योंकि मूड पूरा पब्लिक का सिल्वर बाई में सेट हुआ है, 1 लाख टच किया इंडिया पे। बट एनीवे सिल्वर हैज गिवन इट्स बाई सिग्नल। सो आई हैव माय फंडामेंटल आइडियाज, बट मैं इंपॉर्टेंट देता हूं ये टेक्निकल को। सिल्वर ये बाई सिग्नल, आई डू नॉट हरी, आई डू नॉट जंप इन आई नॉट जंप इन दिस सिग्नल। I'll wait first, I'll let the candle to close। जो मेरा आज दिन का पहला कैंडल क्लोज होता है 10:45 पे, 10:45 आफ्टर माई आवर ट्रेडिंग ओपन्स अप। आई एम अ पोजिशनल ट्रेडर, तो मैं क्या करूंगा, I prefer to wait for the candle close. I do not hurry. I hold positions. I do not square off. हो सकता है इंट्राडे एग्जिट आ गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट आई माय प्लान इज नॉट अ फिट कि मैं एग्जिट करूंगा इंट्राडे। आई कैन कीप इट एज लॉन्ग एज इट इज बुल, आई विल रिमेन बुल। सो फर्स्ट आई लेट द कैंडल क्लोज एंड आई विल प्रेफर टू हैव अ स्पाइक फर्स्ट। मतलब एक कांटे जैसा कोई एक हाई मिले ये कैंडल या नेक्स्ट कैंडल किसी एक में। अगर स्पाइक मिलता है तो ठीक है, तब ये स्पाइक मिलता है मतलब उसके ऊपर बाई करना। अगर नहीं मिलता है, इस कैंडल का हाई टूट रहा है, देन आई विल फायर सम क्वांटिटी। मुझे दिख रहा है अपर साइड में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस है। सो हो सके सिल्वर इज कमिंग बैक, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, तो हो सके ये रेंज में मूव करे। तो रेंज हो सकता है। सो इनिशियली आई विल नॉट गो फॉर बिगर क्वांटिटी। एज इट कंटिन्यूज टू ब्रेक हायर, मुझे जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आएगा, एज पर माई 10x फैक्टर रूल ऑफ पोजिशनिंग, उसको मैं फॉलो करता हूं। तो उसको फॉलो करके जैसे क्वांटिटी आएगा, रेनबो का इधर मेरा पिरामिडिंग रूल, इसका इस्तेमाल करके मैं एंट्री करूं। So currently I'm bullish on gold. Silver has not been bullish so far unless today morning. इतना अर्ली मॉर्निंग आई डू नॉट ट्रेड, दैट्स वाई आप लोगों के साथ बात करने का टाइम मिल जाता है। लार्जली 11 बजे से पहले आई डू नॉट डू एनी ट्रेडिंग एंड आई कंटिन्यू टू होल्ड पोजीशन। सो जैसे निफ्टी नीचे जा रहा है, आई एम मेकिंग प्रॉफिट। तो जरूरी नहीं है कि हर बार, जो जरूरी है व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि हम लोग स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं। दैट इज इंश्योरेंस। अगर कुछ खराब हो जाए, एनीथिंग कैन हैपन, राइट? सो स्टॉप लॉस प्लेस कर देना इज इम्पोर्टेंट। So crude oil is my next. So crude oil, I'm not sure. It is showing bearishness, no doubt about that. This is the bearish candle. We though bearish का order आया है, don't worry, we don't have the entry point yet. There was a strong support coming up. ये रहा spikes. तो spike के नीचे सेल करना ही बेहतर होता है। बट आई थिंक द वे क्रूड का स्ट्रक्चर हुआ है, जैसे रेजिस्टेंसेस है, अपर एंड लोअर लेवल सपोर्ट। सॉरी रिकॉर्डिंग आई थिंक कट हो गया था, आई गॉट डिस्कनेक्टेड। आई इफ यू हैड एक्सपीरियंस्ड एनी टेक्निकल डिफिकल्टी, उसके लिए आई एम सॉरी। एज आई वाज सेइंग कि दिस इज क्रूड ऑयल taking a bearish turn. I might test this bearishness of crude oil with a very tight stop loss. ये रहा tight मेरा stop loss. And first of all, I want this candle to close around 10:45.
तो आई ट्राई क्रूड ऑयल, बट आई एम अवेयर कि यहाँ पे नीचे देखिए इज लॉट ऑफ सपोर्ट्स कमिंग अप. So I'm not expecting a lot of big down move in crude oil. In the long term chart अगर देखा जाए, it is बहुत ही mixed. Line chart creates confusion with this. I will keep it blank. ये एक बहुत ही टाइट रेंज में ऑपरेट कर रहा है, ना तो बुलिश है ना बियरिश. सो अगर मैं ये सेल करूंगा जो क्रूड ऑयल मैंने दिखाया, माय फोकस विल बी टू टेक स्मॉल क्विक प्रॉफिट होम. एंड जितना ही इंपॉर्टेंट है, मतलब सेल प्रॉफिट कमाने के लिए, ये मैं फील करना चाहता हूं द मार्केट का मूड. इज इट रियली बियरिश? बिकॉज इफ इट्स बियरिश, क्रूड ऑयल इज नियर अ वीकली support, so it can break below and it can go big lower. Trump ka fundamental is there, that drill baby drill, that means more crude oil. Russia war tension comes up, bad news for crude oil. So fundamentals jo hai all piled up against crude oil. So it can break. I don't know. So that's why I want to taste this as it giving out the signal. But I'll once again I wait for candle close. So 10:45 मतलब 10:45 ही नहीं, 10:40, 35, 30, 35, 40 around we can start seeing when it looks kind of confidence ki yeah, it's push on. Now this particular trade is going well is natural gas. Now natural gas, I first tried with the 125 minutes with the MCX, but that's looking at the volatility. I tried it two way. One is with the MCX, but I'm out in MCX. Zigzag volatility, चार्ट का स्ट्रक्चर, रेजिस्टेंस, मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा था कि आई शुड होल्ड दिस ट्रेड सिग्निफिकेंट. बट आई वांट टू सी दिस कैन बी अ गुड कमबैक, सॉलिड कमबैक बिफोर विंटर. आई कुड बी वेटिंग फॉर दिस कमबैक. सो आई वांटेड टू पार्टिसिपेट, इसमें मैं पार्टिसिपेट करना चाहता था, बट नॉट, आई वाज नॉट. एमसीएक्स में एक बार प्रॉफिट आ गया, आई कुड हैव अर्नड मोर डेफिनेटली. मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा क्या मेरा एग्जिट सही था या नहीं, वेदर आई शुड, बिकॉज आई वाज इन प्रॉफिट. वंस अगेन साइकोलॉजी प्लेड रोल प्रोबेबली इन माय केस. बट यहाँ पे मुझे राइड भी करना था एंड मुझे रिस्क भी उतना नहीं उठाना था. So what I did, and that I did from very early actually, I'm doing this with the daily chart, that is with the exchange traded fund. डेली चार्ट में मुझे सॉलिड लगा एंड दिस इज कुड बी अ कमबैक. सो मैं काफी सारा बॉयल बाई कर चुका हूं. बॉयल इज ऐसा एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जिसका वैल्यू ऊपर जाता है 2x स्पीड में इफ नेचुरल गैस गोज अप. मतलब नेचुरल गैस अगर 1% बढ़ेगा, बॉयल 2% बढ़ जाएगा. और बॉयल में और मैं पोजीशन बढ़ाया हूं, और पोजीशन बढ़ा के भी I'm in a solid 13% plus gain in Boyle. So there are different ways to do go long, and I'm confident in way more confident to hold on to this trade than I'm confident in holding in the MCX, because natural in later part अगर ये सच में true reversal हुआ, I will get a lot of opportunity in later stage when all these resistances are gone. I'll get a lot of opportunity to ride beautifully without zigzag, zigzag ke bina, using the 125 minutes chart. Now technically अगर देखा जाए, नेचुरल गैस में मेरा पार्शियल एग्जिट आ चुका था, बट आई कुड नॉट टेक इट क्योंकि क्लोज था अपना एमसीएक्स. But by the time that's market, that sometimes you it walks in favor of you. But jab tak market open hua, it was already up. But looking at the Zoe, it was signaling that yeah, it is a strong comeback, that is great comeback. But फिर भी volatility को मुझे focus करना पड़ा. So I decided I'll go more on oil and UNG. मैं pile up करूंगा oil और UNG पे.
और मैं और भी बढ़ाऊंगा, जैसे ही आगे मुझे और कॉन्फिडेंस देते जाएगा, आई विल इंक्रीज. This is the first time after a long time we are close to getting a weekly, but anyway, natural gas के लिए weekly हम लोग उतना फोकस नहीं करते. This is more of a derivative style of trading. तो छोटा टाइम फ्रेम मेरे लिए सुटेबल है. वीकली के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस इज गुड फॉर मी. So daily it has signal, but it is this one is a very strong resistance. अगर इसका ब्रेक हुआ, ये ब्रेक होने में बहुत सारा ताकत चला जाता है बुल्स का. दैट मीन्स ये जो रेजिस्टेंस अपसाइड आएगा, यहाँ पे वेरी लाइकली नेचुरल गैस विल मेक अ स्टॉप ओवर. ये नेचुरल गैस का जो बुलिशनेस है, ये बुलिशनेस के लिए मैं देख रहा था ये इसको, एंड ये मुझे कॉन्सर्न दे रहा है. दिस इज रेनबो, आप जानते हैं जो लोग यूज करते हैं, इट्स अ क्वाइट अ गुड एक्यूरेसी. इट इज गेटिंग बुलिश नियर अ इंपॉर्टेंट बेस लाइन जिसको ये सपोर्ट बना सकता. एंड अगर ये ब्रेक सक्सेसफुल हुआ, सपोज इज सक्सेसफुल, वी आर लुकिंग एट अ प्राइस of European natural gas around $103. Sorry, €103. And that is almost more than a 50%, 100% rise. And actually, it's almost, I think, more than 150% rise. And this can create a significant dire situation in Europe. तो मुझे यूरोपियन जो सिचुएशन है इसके ऊपर थोड़ा नजर रखना पड़ेगा. दिस इज ट्रेडर्स इनसाइट, मैक्रो माइक्रो एंड नेचुरल गैस. आई एम लुकिंग एट स्टोरेज परसेंटेज ऑफ यूरोपियन स्टोरेज. One thing I like to highlight is that European storages are not that strong. I mean, sorry, it means there are storages which are yet to be filled up, and we are in November. So I think the natural gas has a strong fundamental backing, but M6 ka trade will be more risky, 125 minutes. And this could be a new trend, new beginning. And I want to hold this for a long time. M6 I'll enter quickly, I'll enter exit using 125 125 मिनट का चार्ट में. जब सब कुछ स्मूथ रहेगा, ब्यूटीफुल राइड्स मिलेंगे 125 मिनट. तो मेरे कॉमोडिटी प्लेबुक में नेचुरल गैस आई एम गेटिंग बुलिश, नॉट जस्ट बुलिश, वेरी बुलिश. फंडामेंटली लास्ट टाइम आई वाज बुलिश, फंडामेंटल काम नहीं किया बिकॉज इट वाज नॉट अ वेरी कोल्ड विंटर. सो बहुत कुछ चेंजेस होता है. फंडामेंटल इज ऑल्सो डायनामिक, बट फंडामेंटल रीजंस आई एम फाइंडिंग आउट, लुकिंग एट. एंड इसके साथ साथ आई हैव गॉन शॉर्ट ऑन यूरोपियन स्टॉक्स एज वेल. एंड दिस इज माय मोर ऑफ अ लॉन्ग टर्म शॉर्ट्स. ईपीवी के जरिए आई हैव टेकन अ शॉर्ट ऑन यूरोपियन स्टॉक्स. अगर मैं ग्लोबल होता, आई वुड हैव लव टू शॉर्ट देयर बॉन्ड्स एज वेल. I don't think it's ridiculous. I don't think the kind of low rates that's prevailing, it will prevail. This is the EPV. Later on, it might fail, or plus it will be very volatile. Sell-off is always volatile. So trading, याद रखिएगा, is not suitable for everyone. And आपको सूट ना कर सकता है. You should not listen to me and trade. You should make up your own mind. एंड जो लोग मेरे सेटअप इस्तेमाल करते हैं, आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू. अगर हेल्प हुआ है, डोंट फॉरगेट टू पुट अ थम्स अप. ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, एंड एज ऑलवेज, हैप्पी ट्रेडिंग.